सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की जो सदारती समात है, सदारती रेफरेंस पर अदालती राय सुनाने के लिए बेंच कमरा अदालत में पहुंचा है। समात बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपने वकील फारूक अशनाई के हमरा मौजूद हैं। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच। First of all, let me announce the good news. It's a unanimous order of all of us agreeing. I'll just read it. In the course of performing our core duty to administer justice, quote, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, unquote, we judges are bound to, quote, do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. This is our oath of office as prescribed in the Constitution, 3rd schedule. There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of a duty to administer justice in accordance with the law. We must, therefore, be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires this court to render an opinion on any, quote, question of law, unquote, of public importance referred to by the President. To us, the question of law in essence is whether the requirements of due process and fair trial were complied with in the murder trial of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, hereinafter Mr. Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, by the trial court, which was the Lahore High Court, and the appellate court, which was this court. This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Ziaul Haq. The reference was filed during the government of the political party founded by Mr. Bhutto, but the successive governments of other major political parties carried forward this inquiry and did not opt to withdraw the reference, which included when we were hearing the matter, the caretaker government. This collective interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Muhammad Ahmad Khan Kasuri. With the able assistance of the eminent legal minds of the country, we, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, render an opinion on the referred questions in the following terms. I'll read the questions. There were a number of 5 questions. Whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, 9, 10A, due process, and Article 14 and 25 of the Constitution. If it does not, its effect and consequences. I should clarify these questions were already framed when we heard the matter. And our opinion is as under. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. At the relevant time, Article 10A wasn't part of the Constitution, but the principles enunciated therein have always been part of our jurisprudence. The second part of the opinion of this question is, the question and the Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court.
Question number 2 was whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not its effect and consequences. And our opinion is reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case, regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfikar Ali Bhutto case has already been descended to or overruled. Questions number 3 and 5 we have taken together, and these are respectively: whether in the peculiar circumstances of this case, awarding and maintaining of the death sentence was justified, or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And question 5 was whether, on the basis of conclusions arrived at and inferences drawn from the evidence material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. And our opinion is, in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. Question number 4 referred to Islamic injunctions, and our opinion, we kept asking repeatedly that we needed assistance but was not rendered. So our opinion is we were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. So basically, our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. Try to have it rendered into Urdu as well and put up this on the website. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. तो सर फैसला सुनाया है भुट्टो रेफरेंस पर। उन्होंने ये कहा है कि भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक़ पर अमल नहीं किया गया। जब तक गलती तस्लीम ना करें ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। एडवाइज़री दायरे इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर आइनी राय दे सकती है चीफ जस्टिस की जानिब से। अपने मुख्तसर फैसले में कहा है, आखिर में उन्होंने ये कहा कि तफसीली फ़ैसला वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। हम हलफ के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जो राय सुना रहे हैं वो मुत्तफ़क़ा है। तारीख़ के कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई। चीफ जस्टिस की जानिब से अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा गया और आखिर में उन्होंने कहा कि तफसीली फ़ैसला वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जावेद सुमरा में ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जावेद, अपडेट कीजिएगा, फ़ैसला सुना दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। जी बिल्कुल, फैसला जो है वो चीफ जस्टिस काली फाइसा की जानिब से सुना दिया गया है और इस फैसले के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है उन्होंने इत्तफाक राय से ये फैसला, यानी कि ये फैसला कहें या एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में इसको राय कहा जाए, वो राय इत्तफाक राय से दी है। तमाम लोग जो हैं वो इस राय पर मुत्तफिक हैं। ताहम जो 5 सवाल पूछे गए थे उन 5 सवालों का अगर हम क्रक्स निकालें, नटशेल निकालें, तो अदालत की जानिब से अपनी जो राय है वापस सुप्रीम भिजवाई जाएगी या भिजवा इस फैसले के बाद। ठीक है जावेद, आपको हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे, दोबारा राबता करेंगे। मुख्तसर फैसला सुनाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से भुट्टो रेफरेंस पर। उनकी जानिब से कहा कि फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक़ पर अमल नहीं किया गया। जब तक गलती तस्लीम ना करें ख़ुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि एडवाइज़री दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा, हम हलफ के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसला दे रहे हैं। जो राय सुना रहे हैं वो भी मुत्तफ़क़ा है।
तारीख के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई। चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा है, उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल नहीं किया गया। एडवाइजरी दायरे इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, अपने मुख्तसर फैसले में जब तक गलती तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। हम हलफ के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक फैसला दे रहे हैं, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जो राय सुना रहे हैं वो भी मुत्तफ़िक़ा है। तारीख के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, ये सूरत हाल सामने आई। चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में ये भी कहा कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल भी नहीं किया गया। रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला सुना दिया है। अब हम इसकी डिटेल्ड वर्डिक्ट के इंतज़ार में होंगे और इंशाअल्लाह ताला जब डिटेल्ड वर्डिक्ट आएगा और हम अपने वकला से बात कर सकेंगे तो मैं तफसील में आपसे बात कर सकूँगा। मगर जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और उसका आज फ़ैसला उस जुडिशल रेफरेंस में जिसने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं और ये एक तारीख़ी जो कदम आज उठाया गया। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। ये जो फ़ैसला था ये ऐसा एक दाग था इस अदालत में जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इस इदारा से जो इंसाफ का उम्मीद होना चाहिए था, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। अगर कायदे अवाम जैसा शख्स को इंसाफ नहीं मिला हो तो आज मैं जो ये यूनानिमस कोर्ट ऑर्डर है और मैं तमाम जज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जो वकलाक थे उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जो एमिकस क्यूराई जो पाकिस्तान भर में से चीफ जस्टिस साहब ने इस कोर्ट में रिक्वेस्ट किया उनका असिस्टेंस का और जिस तरीके से इन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ा, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ।
इस फैसले के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान ठीक जानिब बढ़ेगा। बड़े अरसे बाद तारीख फैसला होने जा रहा है। आपको ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुआशी जमहूरी तरक्की करेंगे। इस फैसले की वजह से आगे जाकर तरक्की मजीद होगी 44 साल बाद, जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रही है। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तसर फैसले में ये कहा गया है कि गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुनाने जा रहे हैं। बिलावल ने अपनी इस मीडिया टॉक में, जो कि मुख्तसर थी, उन्होंने ये कहा, अदालत ने यह बात मानी कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। बिलावल ने यह भी कहा, भुट्टो रेफरेंस से मुतालिक आज बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से यह फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक पर अमल नहीं हुआ, जबकि गलती तस्लीम ना करें जब तक उस वक्त तक खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना ही अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे सकती है। चीफ जस्टिस ने यह कह दिया अपने इस मुख्तसर फैसले में। जावेद, आप क्या बताएंगे इस मुतालिक? जी बिल्कुल, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से 1979 के अंदर जो अदालत की जानिब से, उस वक़्त की लाहौर हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो उनको सजा का फैसला, आपको बता रहे हैं आज एक बड़ा फैसला आया है 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक, जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी बेंच के साथ ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुत्तफ़िक़ा राय से दिया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया अपने मुख्तसर फैसले में। भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के हक से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। एडवाइजरी दायरा इख्तियार के तहत सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे सकती है, चीफ जस्टिस ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जो तफसीली फैसला है कुछ देर बाद वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। 5 सवालात थे जो पूछे गए थे सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक, जिनमें से पहला सवाल ये था कि क्या भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। दूसरा सवाल ये कहा गया था कि क्या भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था। क्या भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदाराना नहीं था, यह सवाल किया गया। चौथा सवाल यह पूछा गया इस रेफरेंस में कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। पांचवा सवाल ये पूछा गया था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात इनको सजाए मौत के लिए काफ़ी थे। ये 5 सवाल इस रेफरेंस में पूछे गए थे और अब ये बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। 9 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस फैसले में बाकायदा तौर पर ये